Hello students, welcome to MemoNet. I am Sakti Swarup, teacher of MemoNet, and I am here to start with the last lecture for the BPT4. Okay, in this lecture we will be reading energy part and the power part and the circular motion at the same time. So before I go to the portion here, I just want to remind you that if you have done the kinematics and work per energy chapter thoroughly or not, आपको इस चैप्टर में बहुत सारे सवाल लगाना है. ओके क्योंकि अगर ये चैप्टर एकदम बेसिक चैप्टर है, दिस वन इज रियली अ बेसिक चैप्टर बिकॉज ईच एंड एवरी इन ईच एंड एवरी चैप्टर यू विल फेस द सेम थिंग. The kinematics and work per energy will face each and every chapter, whether you go to the rotational motion or you go to the center of mass or SHM or uh, electrostatics. Any chapter you will go, you will face the kinematics and work per energy for sure. Okay, मतलब आप देखोगे ही देखोगे, उसका कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा. तो these are the basic chapters, so you need to do well in these chapters. एंड ऑल्सो उसका वेटेज भी देख लीजिए. काइनेमेटिक्स का 2-3 कुछ सवाल आता है और वर्क पर एनर्जी का वही 2-3 सवाल, 5-6 सवाल तो मिल जाएगा. ओके तो अच्छे से ये वाला पोर्शन अच्छे से करिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज एनर्जी. सो व्हाट इज एनर्जी? A body is said to possess energy if it has the capacity to do work. Okay, बॉडी के पास एनर्जी कब होगा, मतलब कब काम करेगा, उसके पास एनर्जी रहना चाहिए, तभी जाके काम करोगे ना. अगर आप कब काम करोगे, आपके पास अगर एनर्जी नहीं बचेगा तो आप काम कैसे करोगे. बस ये सही. बॉडी हैज द इफ द बॉडी हैज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, इट मीन्स इट पोजेस सम एनर्जी. ओके, so when body possessing energy does some work, part of its energy is used up. Conversely, if some work is done upon the object will given some energy. Okay, so energy and work are mutually convertible. बस आपको पता है क्या, मतलब एक बॉडी अगर काम कर रहा है, मतलब मैं अगर काम कर रहा हूँ, मैं कुछ एनर्जी पोजेस कर रहा हूँ. अगर मेरे ऊपर कुछ मेरे पास कुछ एनर्जी है तो मैं काम कर सकता हूँ. दीज आर क्या, दीज आर कन्वर्टेबल स्टेटमेंट्स ना. सो द एनर्जी एंड वर्क is the convertible statement, and we know that there are two types of energy, that is kinetic energy and potential energy. Okay, so kinetic energy, what do you mean by this? Kinetic energy is the energy of the body by possessed by virtue, it is virtue of its motion, virtue of its motion. ओके, इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी कब हमको पता चलेगा कि अगर एक बॉडी है, if a body has some velocity and this velocity is given by some acceleration or anything. Okay, रेस्ट कंडीशन से वेलोसिटी लाने तक हमें एक एक्सेलरेशन तो चाहिए ही. तो if a body has some velocity, then this the development of energy is known to be kinetic energy. Okay, so kinetic energy का बेसिक हमारे फॉर्मूला क्या है, half mv². Okay, then potential energy, it is the energy of body by virtue of its position. तो पोजीशन के बेसिस में जो एनर्जी हम होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, वर्क डन is equals to minus of del u, that is change in the potential energy. Then important points related to the potential energy. Potential energy is a straight function defined only for position. Then potential energy of a point depends on the reference point. Yes, it depends on the reference point. Potential energy difference between
two position does not depend on the frame of the reference. Okay, potential difference between the two position, अगर दो पोजीशन लिया गया है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. ओके, ये सब हम देखेंगे, अभी हम देख लेंगे. ओके, देन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स. यस, मैं कल पढ़ाया था कंजर्वेटिव फोर्स क्या है. कंजर्वेटिव फोर्सेस इज द फोर्सेस विच डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पार्ट ऑफ द पाथ. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है. दैट इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट. वो पाथ इंडिपेंडेंट फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के ऊपर वो डिपेंड करेगा और ये पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा. देन इफ वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देन वी हैव टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल पॉइंट through the different path, which gives a different value of potential energy at single point. That does not make any sense. Okay, potential energy at a single point हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं और मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी एज ए चेंज हम हमेशा डिफाइन कर सकते हैं. मतलब एक सिंगल पॉइंट पे हम अपना पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हर बार अलग अलग हो जाता है. ओके, सो लेट्स सी द पोटेंशियल एनर्जी इन डिटेल. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मान लो हमारे पास एक बॉल है इधर. ओके, दिस इज वन बॉल एंड द gravitational force will be in downward direction. Okay, and the ball is just left it. Okay, so हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे छोड़ दिया अगर बॉल को हम, अगर कुछ डिस्टेंस हाई कुछ ऊपर से हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वो बॉल नीचे गिरने लगेगा. ओके, let's say it has covered h distance. Okay, so what I will tell, the potential energy, that is del u, is equals to what will be, it will be m g into h. Okay, तो ये कैसे हम डिसाइड किए m g h. देखो हमारा जो नीचे क्या लग रहा है, that is gravitational force, that is mg, and g I have told you everything in the downward I will take negative and in the upward I will take positive. Okay, so g को यहाँ क्या में लिया, माइनस ऑफ g, एंड h हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं. ओके, तो हमारा जब हाइट हम नापते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग फ्रॉम फुट टू हेड, नॉट फ्रॉम हेड टू फुट. ओके, so this will be minus of h, so total value will be, that is m minus of g minus of h, will that comes to be mgh. Okay, so this will be the potential energy. Okay, मान लो this condition देख लो, ये वाला. Okay, in the, this is the it is left out and the ball here is left out and this is mgh. Okay, the potential energy is mgh, and when this ball is taken upward, okay, at a distance height h2, then it will be the gravitational force in downward direction, the height is positive, so we can write m minus of g into h2. So this will be minus mgh2. Okay, so this will be the potential energy. So gravitational potential energy में क्या होता है, मान लो हमारे पास यहाँ बॉल है. ओके, this one is ball. Okay, and when we just releases it, we will just release it, then potential energy will decrease. Why? Because height is decreasing, it means potential energy will also decrease. Okay, the decrease in potential energy, decrease in potential energy, there will be it tends to increase in kinetic energy. Okay, why I am saying like this, because जो gravitational force है वो क्या कर रहा है, वो बॉल को नीचे खींच रहा है, उसका मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ा रहा है. वेलोसिटी बढ़ेगा तो अपना काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो v बढ़ेगा जितना जितना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा है. सो दिस विल इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी. ओके,
Then elastic potential energy. Here in the elastic potential energy, okay, so here we have the spring here, okay, this spring has its constant, that is k, and the usual condition is the natural length. In the natural length there will be no force applying on the block, okay. Let's say this is the block here, and in the natural length there will be no force acting on this block, okay. So we will take this as L is equals to 0. So when we extend this block from natural position to any position, so what it will generate? It will generate the restoring force on the spring, and when we will release it, the block will start oscillating, okay. So this will create energy on the spring. So this is known as elastic potential energy, okay. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखेंगे, हमारे पास वर्क डन, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू F dot dx, okay. So here the spring always tries to what the spring do, what is the work of the spring? Spring always try to keep the body at the natural position, okay, at the natural length, okay. This will always prevent the body, whether it will go for compression or go for the extension, it will always make sure that the body will come to the natural position. So the force in the spring is the restoring force, okay. So what we will do, that is force is minus of k into x. So minus indicates that is it is a restoring force. So the work done is equals to F dot dx integration we have, that is minus k x dot dx integration. So this will be equals to it is from the limit is taken from, let's say, 0 to x naught, okay. Here the L is 0 and here L is equals to x naught, okay. So it is the limit taken from 0 to x naught. So we have minus of k x square by 2 from 0 to x naught, or we can write that is half k x square from x naught to 0, okay, x naught to 0. What I have written, that is the limit I have changed, and minus I have replaced with, and limit I have changed from x naught to 0. So what the final answer will be, half k x square whole into 0 square minus x naught square. So this is how we will represent the elastic potential energy. Sorry, this x square will be replaced with 0 square minus x naught square. Then let's talk about the conservative force. What do you mean by conservative force? Conservative force ऐसा force है जो कि जो कि अपना पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? This will depend upon the initial and the final point, okay. So what I will write, the force is equals to minus of del u upon del x, okay. If this condition satisfies, so this is the conservative force, or we can write F net, that is equals to Fx plus Fy plus Fz, or I can write that is minus of del u upon del x plus minus of del u upon del y plus minus of del u upon del z, okay. This is the condition for the conservative force. So now let's see the potential energy curve. So now we will look for the conservative force, okay. So conservative force क्या है? It doesn't depends upon the path followed, it depends upon the initial and the final position, okay. So in the conservative force we know that F is equals to minus of del u upon del x, okay. Or we can write that is the force F1 net force, let's say we have F net is equals to F1 plus F2 plus F3. So in place of this we can also write minus of del u upon del x
प्लस माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल जेड इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव। ओके, अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे ये। सो लुकिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, this is the energy generated by the conservative force. Okay, so here the F is equals to minus of del u upon del x, and when the del u is increasing, okay, it means potential energy is increasing, it means the force is in negative direction. If this will increase, it means du upon dx is positive and we have negative in the as a coefficient, so the force will be in negative direction. Negative force मतलब क्या हो रहा है, attraction force हो रहा है. Okay, when du upon dx, that is the change in the gradient of the potential energy, when it is decreasing, the overall quantity will negative, then this will be negative, and in the negative one कोफिशिएंट इज ऑल्सो प्रेजेंट, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. फोर्स पॉजिटिव मतलब दिस इज अ रिपल्सन फोर्स. ओके, सो नाउ वी विल सी फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू मीन्स बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन द फोर्स विल बी जीरो, देयर विल बी नो फोर्स, नहीं फोर्स जीरो नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब आपके पास फोर्स तो लग रहा होगा पर ओवरऑल द नेट फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी जीरो. ओके, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा बट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी जीरो. सो इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. ओके, सो लेट्स से स्टेबल इक्विलिब्रियम. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम? व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम a position and a force acting on it brings back to the initial position, then it is said to be stable equilibrium. Let's say हमारे पास कुछ ऐसा पाथ है. ओके, हमारे पास कुछ ऐसा पाथ है और हम क्या किए, एक बॉल को लाए और इधर हम छोड़ दिए. ओके, मतलब बॉल इधर था, लेट्स से बॉल इधर था, हम उसको ऐसे ऊपर ले आए, छोड़ दिए. बॉल क्या करेगा, बॉल ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा. बॉल क्या कर रहा है, मतलब अगर हम थोड़ा सा स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं बट द बॉल डज नॉट मूव एनीवेयर, इट rather than it comes to its original position, that is the force acting on it will bring back to the initial position. So this is known as stable equilibrium. Then let's say unstable equilibrium. Unstable equilibrium is when a particle is displaced slightly from a position and force acting on it tries to displace the particle further away from the equilibrium position, then it is said to be unstable equilibrium. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था, हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे थे तो वो फोर्स क्या कर रहा था, वो उसको इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा था. पर इधर देखिए, अगर हमारे पास एक पाथ ऐसा हुआ ओके, और मैं क्या किया, एक बॉल लाया और ऊपर रख दिया और हम उसमें थोड़ा सा फोर्स दिए और स्लाइटली डिस्प्लेस किए. अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही स्लाइटली डिस्प्लेस करोगी तो बॉल विल गो आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन. द बॉल विल नेवर कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. सो दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. देन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट. पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो चेंज हो रहा है. ये नीचे आओगे तो चेंज होगा. ओके, व्हेन द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कंटिन्यूज टू बी इन इक्विलिब्रियम इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन, दिस इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ओके, लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा पाथ है. ओके, और यहाँ हमारे पास एक बॉल है जिसको हम थोड़ा सा फोर्स डिस्प्लेस कर दिए, तो बॉडी क्या होगा, डिस्प्लेस अगर करोगे थोड़ा सा जाके आगे रुक ही जाएगा ना, थोड़ी ना फिर चलने लगेगा, एकदम चलते जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना.
आगे जाके रुक जाएगा। उसका मतलब क्या हो रहा है, इस पाथ में in this path it is having the neutral equilibrium. Okay, having the neutral equilibrium. So for the stable equilibrium we know that the condition will be, for the equilibrium पे क्या condition होना चाहिए, for the equilibrium we know that the net force acting on this will be 0, F net will be 0. It means if I will tell the force only applied on the x direction, so what will be the expression, that is minus of del u upon del x will be equals to 0. Okay, that is minus of del u upon del x is equals to 0, or you can simply write that potential gradient will be 0, potential energy gradient will be 0. So we have when we have the potential energy, if we differentiate it and it becomes the value comes to be 0, then this will be in equilibrium. So for the stable equilibrium, if I will check this any of the expression, let's say we have force is equals to something and it is dependent on x. Okay, so if I need to find out that this is in stable equilibrium or unstable equilibrium or anything. Okay, so we have to do, this is not force, this will be the potential energy. Okay, so what will we have to do, we have to first differentiate, that is del u upon del x. If it comes to be 0, this one will be the point of equilibrium, and when we will double differentiate it, that is del square u upon del x square, if it comes to be negative, that is less than 0, not equals to, it is less than 0, if it comes less than 0, then it is in stable equilibrium. मतलब नेगेटिव, अगर डबल डिफरेंशिएशन करोगे नेगेटिव आ गया तो ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, देन फॉर द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम will have the same thing, that is first we will do del u upon del x, that will be 0, इसमें आपको पॉइंट आ जाएगा. then del square u upon del x square, if it is greater than 0, then it is known as unstable equilibrium. Okay, then for the neutral equilibrium, del u upon del x is equals to 0 and del square u upon del x square will be also equals to 0. This will be the condition for the neutral equilibrium. तो यहाँ क्या देख रहे हैं, तो हमारा पास जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है उसका कंडीशन क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 0, नेगेटिव होना चाहिए, और ये डबल डिफरेंशिएशन जब करेंगे हम ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पॉजिटिव होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए नेगेटिव होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए 0 होगा. ओके, so let's see this question. The potential energy between two atoms in a molecule is given by U is equals to A upon x to the power 12 minus B upon x to the power 6, where A and B are positive constants and x is the distance between the atoms. The system is in stable equilibrium when. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछ रहा है. ओके, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हम करेंगे कैसे, डी यू अपॉन डी एक्स हम कर देंगे. ओके, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स. ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, पहले a अपॉन एक्स टू द पावर 12 माइनस b अपॉन एक्स टू द पावर 6 को हम डिफरेंशिएट करेंगे with respect to dx. So here we have, that is minus it is a, this will comes to be 0. Okay, तो a x to the power minus 12 minus b x to the power minus 6 को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 0 आना चाहिए. ओके, d अपन dx.
तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, if we differentiate this is minus of 12 x to the power minus 13 minus 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 plus plus 6b, ये a छोड़ दिया मैं, हाँ ये a, ओके 6b x to the power minus 7 is equals to 0. Okay, so here we have that is 12 x to the power 12a x to the power 13 is equals to 6b x to the power minus 7, x to the minus 13 and minus 7. तो ये अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x to the power माइनस 6. ओके, यहाँ x to the power माइनस 6. तो x to the power माइनस 6 को अगर हम RHS साइड ले आएंगे तो x to the power 6 इज इक्वल्स टू 12a अपॉन 6b, तो ये 2a अपॉन b हो गया. सो x इज इक्वल्स टू 2a अपॉन b होल टू द पावर 1 अपॉन 6. तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर. तो हमें ऐसे फाइंड करना है कि कौन सा पॉइंट में स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है, किस स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, ये सब हमें याद रखना है और फाइंड करना है. देन वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम टेल्स दैट द वर्क डन बाय नेट फोर्स F net in displacing a particle equals to the change in kinetic energy of the particle. तो the work energy theorem suggests that the work done by all the forces, whether it's be conservative, that is क्या क्या होना चाहिए, conservative, then non conservative or non conservative force, or the external force और इंटरनल फोर्स. ओके, सब फोर्स मिला के जो वर्क डन करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम. तो हम इस रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कैसे अप्लाई करना है वर्क एनर्जी थ्योरम को. ओके, और इधर मैं और एक बेसिकली बात बोलना चाहूँगा. अगर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ओके, हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, द चेंज इन द कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब मान लो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है. द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, मान लो पोटेंशियल एनर्जी, हम ऊपर से बॉल फेंक दिए तो बॉल नीचे आ गया. बॉल नीचे जैसे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज होते जाएगा, और वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज होते जाएगा. ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल गिव आउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. Let's see in this question, the block shown in the figure is released from rest. Find out the speed of the block when the spring is compressed by 1 meter. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास जो ब्लॉक है वहाँ 2 मीटर, वो 2 मीटर डिस्टेंस पे है पहले एट इनिशियल कंडीशन, और ये रेस्ट पे है v इक्वल्स टू 0. देन जब हम छोड़ दिए ये ब्लॉक को तो रिस्टरिंग फोर्स खींचेगा, इसका मतलब हमारा ब्लॉक कहीं यहाँ आ जाएगा. ओके, यहाँ आ जाएगा, जो कि 1 मीटर फ्रॉम द नेचुरल लेंथ है. ओके, कंप्रेस टू 1 मीटर, और ये हमारा नेचुरल लेंथ है. तो हम क्या करेंगे इसमें, हमारा मैं क्या बोला था, द वर्क डन बाय एनी ऑफ द फोर्स विल बी द सम ऑफ द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो सम ऑफ द वर्क डन क्या हुआ, यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, बस स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है. और स्प्रिंग फोर्स हमें कितना पता है, स्प्रिंग फोर्स, ओके, इसके लिए वर्क डन क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. ओके, x1 इज द इनिशियल लेंथ एंड x2 इज द फाइनल लेंथ. ओके, सो तो हम क्या करेंगे, और इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी क्या था, 0 था, और फाइनल कंडीशन में हमें वेलोसिटी निकालना है.
तो हम क्या करेंगे, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर. फाइनल कंडीशन में लेट से यहाँ वेलोसिटी v है. ओके, तो माइनस हाफ m 0 स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ के x1 कितना है 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस x2. व्हाट इज x2? x2 इज 1, इट मीन्स 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर. ओके, so this will be equals to 3/2 k is equals to half m v square. 2 से 2 cancelled, then v is equals to 3k upon m under root. So this is the velocity or speed of the block at 1 meter when it is compressed. Then let's see another question. A block of mass m is dropped from the height h above the ground. Find out the speed of the block when it reaches the ground. तो क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, लेट्स से दिस इज द ब्लॉक. ओके, एंड इट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच. हाइट एच से हम ड्रॉप कर दिए और वो जाके नीचे ग्राउंड में टकराया. तो किस स्पीड में वो टकराएगा. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v. तो यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, बस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स. वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज mgh. ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ. हम यहाँ से क्या रिलीज किए हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया v. ओके, सो हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर. v इनिशियल कितना है 0 है, उसका मतलब हाफ m v फाइनल स्क्वायर हम लिखेंगे. तो mgh इज इक्वल्स टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर. सो m से m कैंसल्ड हो गया. So v final is equals to 2gh under root. So this will be the final velocity when the block will reach the ground. This question, that is the block shown in the figure is released from the rest and initially the spring is at its natural length. Okay, write down the energy conservation equation when the spring is compressed by L1. Okay, तो L1 डिस्टेंस में स्प्रिंग हम कंप्रेस, मतलब हमारा स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, उसका मतलब ब्लॉक कहीं यहाँ पहुंचा होगा. ओके, एट दिस पोजिशन ब्लॉक विल हैव रीच्ड नाउ. ओके, आफ्टर वी रिलीज द ब्लॉक फ्रॉम द अपर पार्ट. सो which type of forces is there is acting? We have the gravitational force, that is it is डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा. तो दिस वन इज g cos थीटा. ओके, दिस इज थीटा एंड दिस वन इज g sin थीटा. सो विच आर द टाइप ऑफ फोर्सेस अप्लाइंग हियर? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज g sin थीटा, and the compression force or the restoring force of the spring. Okay, so spring restoring force, spring work done कितना हो जाएगा? Spring work done will be equals to half k x initial square minus x final square. So this is equals to half k x initial, that is first the spring is not compressed, it means it is present at the natural length. So 0 square minus x final is L1 square. Okay, final compression is L1. So this one is the work done by the spring. Then work done by the potential energy. Work done by potential energy is equals to, okay, तो हमारा potential energy कितना हो जाएगा? mg is the force, and then how much it have covered the distance, that is L plus L1, mg sin theta whole into L plus L1. So this much of distance it has covered. Then the sum of all the forces, sum of all the work done will be equals to change in kinetic energy. So half k minus half k L1 square plus mg sin theta L plus L1 is equals to, at the initial condition the velocity is 0. Okay, and when it is present at L1, okay,
at the compressed state, the velocity v final, let's say v. Okay, so half m v final square, that is v square. Okay, so this much, this is our equation for the energy conservation. If we arrange it, we will see mg sin theta L plus L1 is equals to half m v square plus half k L1 square. So this is our required equation. So this type of question we will also face, always face in each and every chapter. So that type of, that is energy conservation, we have to analyze how many type of forces is acting there and which forces is doing work or not. Okay, so this type of condition we will face in each and every chapter. So I am particularly telling that work power energy is the important chapter, very important chapter. So in my point of view, you should take time and also solve more and more questions in this chapter. Okay, find out the distance traveled by the block as shown in the figure if the initial speed of the block is v and nu is the coefficient, is the friction coefficient between the surface of the block and ground. Okay, so what we need to find out how much distance the block has traveled. Okay, so in this question, the frictional force, what is the frictional force? Frictional force is nu into n, and this force is non-conservative in nature. It is non-conservative. Okay, it will depend upon the path followed while doing the work. Okay, so we know that sum of all the works are equals to change in the kinetic energy. So let's write one by one which type of work in this condition it is applied. Only one work, the force, that is frictional force. Okay, so this will be frictional force. We know that F is equals to nu into n. It means nu into m into g, and the work done by force, frictional force, is nu mg into, let's say the work done here is let's say the displacement of the block is x. Okay, it has displaced something x distance, so nu mg into x, which will be in negative, because the work and the angle between the force and the displacement is 180 degree, so it is negative. Okay, so we can write the equation as minus of nu mg x is equals to, in the initial condition we have velocity v, and in the final condition what it will happen, if the velocity is the frictional force is there, it will reduce the velocity, and at some point of time the block will be at rest. Okay, at final condition vf is 0, so what we will write, half m vf square minus v initial square. Okay, it means v final square minus v initial square. V final square is 0, so we have only v initial square. It means nu mg x is equals to minus of half m v square. Okay, so minus to minus cancelled out, m to m cancelled out, so we have the value of x is v square upon 2 nu g. Okay, so this one is the distance traveled by the block in this case. Then our topic is power. Power is defined as the time rate of doing work. What is power? Power is the rate of doing work. It means work done upon time taken. Okay, तो पावर बेसिकली क्या होता है, तुम कितने टाइम पे कितना वर्क कर रहे हो. ओके, सो द पावर हियर, द वर्क डन इज f dot s upon t. Okay, so here work done is what, which quantity? Work done is which quantity? It is a scalar quantity, and then time taken is also a scalar quantity, so power will be a scalar quantity. Okay,
And if we talk about the unit of power, we know that power is equals to work done upon time. Then work done, you know that Newton meter. Okay, Newton meter, it's SI unit. And time, for time we have second, so Newton meter second inverse, or we can tell it as watt. Okay, the power, the SI unit is watt. So if we talk about the dimensional formula, then power is equals to the dimensional formula will be, for the Newton we have M L T to the power minus 2. Then for the meter we have another L, it means L square, and second is the time, so it is T to the power minus 3. Okay, so this one is in place of minus 2 we will write minus 3. So this is the dimensional formula of power. Let's see one question here. 1 kilowatt motor pumps out water from the well of 10 meter deep. Calculate the quantity of water pumped out per second. Okay, so here 1 kilowatt motor pumps, it means power is given as, power is equals to 1 kilowatt, it is equals to 1000 watt. Okay, and it is told that from it is pumped out from 10 meter deep. 10 meter deep, it means the work done is equals to mg into h, it means m we don't know, into 10 into h is 10 meter. Then quantity of water pumped out per second will be, power is equals to work done upon time taken, that will be equals to m into 10 upon 1 second will be equals to 1000 watt. Okay, so here 100 is cancelled out, then our mass will be equals to 10 kg. So this is the amount of water pumped out per second. Let's see another question on power. The blades of windmill sweep out a circle of area A. If the wind flows at a velocity v perpendicular to the circle, what is the mass of the air passing through in time t? Okay, तो let's say ये हमारा जो circular area है, और this area is let's say A, and wind is passing perpendicular through the surface area of the circle. Okay, through the area of the circle, cross sectional area of the circle. So this is equals to this will be flowing with velocity v. Okay, so if I will talk about the volume of the air passing in time t, is equals to A into V. Okay, so mass of air passing through it in 1 second, it is equals to A V into rho. Okay, we know that mass equals to density equals to mass by volume. It means mass equals to volume into density. So mass of air passing in t second, it is equals to A V rho into t. So then let's see second one, that is what is the kinetic energy of the air. So kinetic energy हमारा क्या हो जाएगा? So kinetic energy is equals to half m v square, that is equals to half into, in place of m what we will write, A v rho t into v square, that will be equals to half A v cube rho into t. Then assume that windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy. So what will be the electric power? The third one, that is wind, and 25% of the wind energy is converting into electrical energy. So it means 1 by 4
of the wind energy. Wind energy, it is how much? This one, that is half a v cube rho t is converting into electrical energy. So all the values are given here. Okay, you can put these values and find the answer. Please mention in the comment box what we did get it, the third answer what you will get it. Okay, so please don't forget, mention in the comment box. Let's see now our new topic, that is circular motion. What do you mean by circular motion? Any object that moves along the fixed point, that rotates along the fixed point. Let's say this is one of the fixed point and a object is rotating around this fixed point. Okay, so this is known as circular motion. It is performing circular motion. Okay, circular motion. एक फिक्स्ड लोकस में वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा. So kinematics, let's see kinematics of circular motion. We have angular position. It is just related to the what we are doing in the rectilinear motion. And at that time we are talking about the only position, and here it is angular position. What is angular position? The position vector that made some angle with the axis. Okay, let's say this is the theta, and theta here is the angular position. And if we are talking about angular displacement, when we changes from one position to another, okay, this will create some angle here. Okay, that is del theta is the angular displacement, and theta is the angular position. In the rectilinear motion, what we are studying, that is velocity, only velocity. Velocity is equals to displacement upon time. Okay, in this case we will study, that is in angular velocity, that is equals to that is displacement upon time, angular displacement upon time. Okay, so here if we talk about the average angular velocity, okay, that is only average velocity. If you are if I will tell, you have to tell that the average velocity, that is equals to total displacement upon total time. Okay, ये तो सबको क्लियर है. इधर क्या पूछा गया है? The average angular velocity. If I will tell average angular velocity, that is del w is equals to del theta, that is the total displacement, angular displacement upon total time. Okay, then instantaneous angular velocity. In instantaneous velocity, what we are studying, that is v instantaneous is equals to ds upon dt. Okay, matlab small change in displacement upon small change in time. So in the average angular velocity, we will see that dw is equals to d theta upon dt. Okay, that is small change in the displacement, angular displacement upon small change in time. Let's see one question out of here. If theta depends on the time t in the following way, theta is equals to 2t square plus 3, then find out the omega, that is angular velocity average up to 3 seconds. Okay, so in this case we are finding out omega average. It means we have to do, that is we have to see the changes in the theta from 0 to 3 seconds. It means 2t square plus 3 from 0 to 3 seconds upon total time, that is 3 seconds. It is 2 into 3 square, that is 9 into 2, 18 plus 3 minus 2 into 0 square, that is 0 plus 3. Okay, minus 3 upon 3. So this will be equals to 9 into 2, 18 plus 3, 21 minus 3, it is 18 upon 3, that will be 6 radian per second. Okay, the SI unit of angular displacement is angular velocity is radian per second. Then if we are to find out the omega at 3 seconds, what is it question asking about? Omega at 3 seconds मतलब आपको instantaneous angular displacement निकालना है. So omega is equals to
that is theta upon t, sorry, this is d theta upon dt, and it is d omega. Okay, so we are finding out the small change. Okay, so d theta upon dt, theta it is equals to 2t square plus 3. So if we differentiate it, that is 4t plus 0, and we are taking at 3 second, okay. So this will be equals to, the d omega will be 12 radian per second. Then relative angular velocity मतलब क्या है, मतलब अगर हम दो पॉइंट लेंगे, let's say this is a point and this is b point, and we are finding the relative angular velocity of one point with respect to other point. तो अगर हम ये एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे, तो हमारा जो हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट है, जो इनके एक्सियल डायरेक्शन में है, ये वाला और ये वाला जो वेलोसिटी है, ये क्या काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटीज की तरह गया। और हमारा कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, that is the perpendicular component only will work on it. Okay, so that's why we are writing, that is omega is equals to v perpendicular upon r. R is the distance between the two bodies, that is a and b. So in this case we will have, that is this one is v b sin theta, and this is this perpendicular component is va sin theta. So how we will write, that is va perpendicular minus vb perpendicular upon the distance, that is r. Okay, so here what we have, that is vb perpendicular is in different direction and va perpendicular is in different direction. These two are vectors. So how can we write this vb sin theta? We can also write it as if we will take this one as positive, so we will take, sorry, let's say this direction we are taking as positive. Okay, this direction we are taking as positive, so this direction we will taking as negative, as it is in opposite direction. So we can write va perpendicular minus of vb perpendicular, okay, because of the direction, upon r. So this will be equals to va sin theta plus vb sin theta upon r is the relative angular velocity here. Okay, this is the relative angular velocity. Let's see one question on relative angular velocity. Okay, two moving particles p and q are 10 meter apart at a certain instant. The velocity of p is 8 meter per second and making 30 degree with the line joining p and q, and q is 6 meter per second, that is making 30 degree with the pq in the figure. Okay, so sorry, I have not mentioned the figure here, so this will be the our figure. Then the angular velocity of q with respect to p in the radian per second at the instant is. Okay, so we have to find out the angular velocity of q with respect to p. So what we will write, that is v perpendicular of q minus v perpendicular of p upon r. Okay, so here v perpendicular p, v perpendicular q, we will be taking it as positive. Okay, so v perpendicular q in which direction, this direction. Okay, this is we are taking as positive, so this one will take it as negative because it is just opposite to that of. Okay, so v perpendicular p is negative. Okay, so this is, if this is 30 degree and this is 6 cos 30 and this one is 6 sin 30. Okay, and here it is 8 cos 30 and it is 8 sin 30 degree. Okay, so angular velocity, relative angular velocity of q with respect to p will be equals to v perpendicular q is 6 sin 30 minus v perpendicular of p is 8 sin 30 upon
how much is the distance between them? That is 10. So this will be equals to 6 sine 30 plus 8 sine 30 upon 10. So this will be our relative angular velocity of q with respect to p. So find this out and mention in the comment box. Okay, this one is task for you. So here let's see the angular acceleration. Angular acceleration, that is alpha, like that of the acceleration, we know that velocity upon time taken. The angular acceleration is equals to the angular velocity upon time taken. Okay. So average angular acceleration means we are finding out the angular acceleration at a particular time instant. Okay. Not particular time instant, it is at a particular duration. It means if we have the angular acceleration, let's say alpha is equals to alpha average, okay, is equals to del omega upon del t, or we can write omega 2 minus omega 1 upon t2 minus t1. If we are talking about the instantaneous angular acceleration, that is alpha at a particular instant, okay, instantaneous, मतलब एक कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट में हमें अगर बोला गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा है निकालो, ओके, सो इन दैट केस वी विल डू डी ओमेगा अपॉन डी टी. ओके, देन लेट्स से अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. ओके, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंड वी हैव टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल. लेट्स से दिस पार्टिकल इज प्रेजेंट एट दिस पोजिशन एंड इट हैव टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, in the tangential to the circular path, that is tangential acceleration, and one is towards the center, that is centripetal acceleration or radial acceleration. So for the tangential acceleration at, it is equals to, that is dv upon dt, or we can say alpha into r. Okay, and for the radial acceleration ar or centripetal acceleration, we have, that is omega square r, or we can write v square upon r square into r, that is equals to v square upon r. Okay, this is the radial acceleration and this is about the tangential acceleration. So relation between the angular acceleration and tangential acceleration, that is the tangential acceleration is equals to alpha into r. This is one relation. Okay, so it is the relation between angular acceleration and tangential acceleration. What is angular acceleration? That is alpha, and tangential is at. And also in this case, if anyone will tell what is the net acceleration here, okay, so we have two vectors at 90 degree. So the vector sum will be at square plus ar square under root. So this is the net acceleration. Here let's see one question here, that is a particle travels in a circle of radius 20 cm at a speed that uniformly increases. If the speed changes from 5 meter per second to 6 meter per second in 2 seconds, find the angular acceleration. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमारे पास द इनिशियल स्पीड है that is 5 meter per second and final that is 6 meter per second. So हम यहाँ से the 80 निकाल लेते हैं. Okay, the acceleration is 6 minus 5 upon 2, that is v2 minus v1 upon 2, that is it is 0.5 meter per second square. Okay, so this is the tangential acceleration and we have to find out the angular acceleration. So recently I have just told out, that is tangential acceleration is equals to alpha r into alpha. Okay, so alpha is equals to 80 upon r. So tangential acceleration is 0.5 upon the radius, that is 0.2 meter. It is 20 centimeter, it means 0.2 meter. Okay, so we have, that is 5 by 2, or it is equals to 2.5 radian per second square. Okay, so this is the angular acceleration. Here in the question given that a particle moves in a circle of radius 20 cm, its linear speed at time is given by v is equals to 2t. Okay,
So find the radial, tangential and tangential acceleration at t equals to 3 second, and hence calculate the total acceleration at this time. Okay, we have to find out the total acceleration. So we have the tangential. Let's find out the first we have to find out the tangential or radial acceleration. If I will say tangential acceleration at is equals to dv upon dt. Okay, so this is 2, because on differentiating v is equals to 2t, on differentiating it we will get dv upon dt as equals to 2. Okay, so here the tangential acceleration is 2, and if I will talk about the radial acceleration, that is v square upon r. Okay, so this is equals to the velocity or speed at speed at t equals to 3 second will be, speed is given as expression 2t, so 2 into 3 is equals to 6 meter per second. Okay, so 6 square upon r, that is radius is 0.2 meter, so it is 36 upon 0.2, so this will be equals to 180 meter per second square. So radial acceleration is 180 meter per second square and tangential acceleration is 2 meter per second square. So the total acceleration will be, total acceleration is equal to, that is 180 square plus 2 square under root. What I have done, that is 80 square plus ar square under root. So this will be our answer. So you find out and mention in the comment box what is the answer here. तो रिलेशन अमंग द एंगुलर वेरिएबल्स. ओके, सो हम क्या पढ़े थे, हमारा लीनियर जब हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, हमारा 3 इक्वेशन बता दो. v इज इक्वल्स टू u प्लस at. ओके, देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, देन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, these are the linear expressions. लीनियर जब हम रेक्टिलिनियर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं तभी होगा. सो एंगुलर वेरिएबल्स, अबाउट द एंगुलर वेरिएबल्स वी विल रिप्लेस v as omega 2. okay, let's say omega 2. okay, and u as omega 1, then a as alpha and t will remain as such, and the s as theta. okay, in the angular variables we will express in these terms only. okay, so what we will write, v is equals to u plus at. in place of that we will write omega 2 is equals to omega 1 plus alpha into t. Then v square minus u square equals to 2s. in place of that we will write omega 2 square minus omega 1 square is equals to 2 alpha into theta. okay, then s equals to ut plus half at square. for that theta is equals to omega 1 into t plus half alpha t square. So these are the equations that we use in the circular motion. okay, so let's have a look, and with this I complete my circular motion. Only the kinematics part, dynamics part I will teach you in the at the end of laws of motion. okay, so with this I think your preparation will be well enough to do in the BPT4. so prepare very well and क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करो और अच्छे से थ्योरीज पढ़ो. अपना कुछ अगर शॉर्ट नोट्स है उसको पढ़ो. शॉर्ट नोट्स तो अभी फॉर्म नहीं किए होंगे, तो आपको सबसे यही तो फायदा देगा मेमोनीट का रिवीजन पत्रिका. ओके, अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का वो है सब्सक्रिप्शन है, उसका मतलब आपके पास रिवीजन पत्रिका भी होगा, तो वहां से आपको शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छा मिलेगा. यू विल गेट द शॉर्ट नोट्स एंड यू कैन रिवाइज इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम. ओके, बहुत कम टाइम में रिवाइज बहुत अच्छा चैप्टर हो जाएगा. और अगर हो सकता है तो वो खरीद लो. और मेरे पास जैसे कि नोट्स आपका पास रहना ही चाहिए. और नोट्स किस बेसिस में बना रहे हो, नोट्स में हम तो पढ़ा के जा रहे हैं, आप बना रहे हो या नहीं. अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो क्या करो, तो हमारे जो मेमोनीट के चैनल है वहाँ पे नोट्स भी मिलता है. एलाइट प्रोग्राम के अंडर जाओगे
तो नोट्स मिलेगा। नोट्स से क्या वो नोट्स क्या खासियत देता है, देखो फिजिक्स, व्हाट फिजिक्स इज ट्राइंग, दे वर ट्राइंग टू आस्क इन द फिजिक्स सेक्शन, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर नॉलेज ओनली, ओके। वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फॉर्म करके दे देते हैं, ओके। तो वही हम क्या किए हैं, उसी कॉन्सेप्ट को लाके एलाइट प्लान में रख दिए हैं, ओके। एलाइट प्लान के जो हमारा नोट्स है उस सेक्शन में हम उसी टाइप के जस्ट जो थ्योरी रहेगा तो वही को रख दिए हैं, और वो उसमें मेंशन भी है ये किस किस साल में आया था, इन विच ईयर डिड दे आस्क दिस क्वेश्चन, ओके, फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। तो यू कैन बाय द एलाइट प्लान with the Brahmastra test series and the NTA PYQ, and this will be best for you. Till now this will be the best for you, and after that you can go for the D PYQs, that will be coming in the next month, I think so, okay. So इतना खरीद लो, बहुत सही रहेगा। जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है ना, सब ये कवर करते जाएगा। आपको PYQ चाहिए, PYQ देगा। आपको एलाइट प्लान के आपके पास नोट्स नहीं है या फिर क्वेश्चन करने के लिए नहीं है, एलाइट प्लान से वो सब मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज ब्रह्मास्त्र विल सॉर्ट आउट योर शॉर्टनेट्स, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज विल सॉर्ट आउट, द रिवीजन पत्रिका विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग इन एवरी एस्पेक्ट। मतलब काम इतना सही जा रहा है ना, मतलब एवरी एस्पेक्ट में आपको मिल जाएगा। जो आप ढूंढ रहे हो वो सब मिल जाएगा उसमें, अगर आप खरीद रहे हो तो, ओके। So with this I complete my today's lecture. Let's have a goodbye and all the best for your tomorrow's exam. Okay, thank you, bye bye.